Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Testbook Super Coaching. I hope all of you are doing really well. Merry Christmas to all of you. And of course, we are really closely moving towards the end of 2024. Without further ado, let's just very quickly get started. Jaldi se start kar dete hain, so that we're able to wrap it up on time. Now, today is a very important topic because aajkal not only for your overall understanding, but what are we able to see that there's a lot of stress on cultural studies, and cultural studies पे stress होने की वजह से automatically comparative literature has become very important. Now, comparative literature के अंदर ये एक broad umbrella term है. I was just sharing the link of the class that we started with the class altogether. Right. Now, when we're talking about comparative literature इतना important term suddenly क्यों हो गया है? ये इसलिए हो गया क्योंकि इसके broad ambit के अंदर आपकी translation studies आ रही हैं, आपके क्रिटिकल इवैल्यूएशंस आ रहे हैं, टेक्सचुअल कंपैरिजंस आ रहे हैं, और बेसिकली ये जो कंपैरेटिव लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है, इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर. दैट लिटरेचर ट्राइज टू ट्रांसेंड योर लिंग्विस्टिक एज वेल एज नेशनल बाउंड्रीज. तो जो लिटरेचर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडिया में, वही लिटरेचर आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं और उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट? So, what are we able to see? We're able to see that the birth of translation studies, the birth of the concept of entirely world literature actually resulted in making sure that people were penetrating into understanding what is this entire corpus called. और इसी की वजह से comparative literature आपका बहुत ज़्यादा popular हो गया था. So sorry. I'm a little down with this. Okay, good evening, good evening, good evening, good evening, Himanshi, Minakshi, Dominator, Prerna, Divya, Future Dreams, Neha, Devashish. Merry Christmas to everybody, Monica, Priyu, Anjali, Pooja. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Good evening. चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारे 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंपैरेटिव लिटरेचर. और कंपैरेटिव लिटरेचर की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टुडेज डे एंड एज. तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट व्हेनेवर वी आर लुकिंग एट कंपैरेटिव लिटरेचर, बहुत सिंपल, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कंपेयर, जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर देयर इज अ रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इन अमेरिका, देयर इज अ रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इन यूरोप, देयर इज अ रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इन दलित राइटिंग्स इन इंडिया एक्सेट्रा. तो कंपैरेटिव लिटरेचर जो है, with the increase in this awareness about cultural studies, हम क्या देखते हैं कि कंपैरेटिव लिटरेचर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. इसमें आज हम लोग देखेंगे, वील टॉक अबाउट कैसे आपके ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट आ जाता है, कैसे आप देख पाते हो कि कंपैरिजन का एक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अगर आप कह रहे हैं वी आर कंपेयरिंग ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स बाय डिफरेंट राइटर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, तो वो कंपैरेटिव लिटरेचर का एक स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसके ऊपर आप अपनी पूरी की पूरी थीसिस डेवलप करते हैं. या लेट्स कंपेयर ट्रॉमा लिटरेचर दैट इज कमिंग फ्रॉम से जर्मन लिटरेचर के अंदर, द ट्रॉमा राइटिंग्स आर मच मोर dense because you're able to see what happened. Even Oscar Schindler की story जो आपको थॉमस कैली स्किंडलर्स आपकी तरह में बताते हैं, स्किंडलर्स लिस्ट स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी इसके ऊपर बनी हुई है. तो अगेन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप डिफरेंट वर्क्स को कंपेयर कर रहे हैं. और आज हम लोग यही सारी चीजें देखेंगे कंपैरेटिव लिटरेचर के बारे में, वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज जो आपके आ रहे हैं व्हेन यू आर मेकिंग द कंपैरिजन. सो दैट विल बी देयर. सो जल्दी से देरी नहीं करते हुए लेट्स जस्ट वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे पहले व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव राइटिंग्स, ठीक है? ये जो कॉन्सेप्ट है, I'll just shorten my, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, ये कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली? तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चीज जो आपको याद रखनी है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर इज आल्सो टाइड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर. वर्ल्ड लिटरेचर को सबसे पहले किसने दिया था? वर्ल्ड लिटरेचर को सबसे पहले गर्टर ने दिया था, और टैगोर ने भी कहा है विश्व साहित्य के बारे में. दैट मीन्स लिटरेचर ट्राइज टू ट्रांसेंड लिंग्विस्टिक एंड नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है? आपका नेशनल बाउंड्रीज ये बिल्कुल इट ट्राइज टू ट्रांसेंड, इट ट्राइज टू make sure that it's going away, and it is also trying to transcend linguistic barriers. तभी आप देखते हो, look at it, जैसे अगर if you're talking about the axis of मॉडर्न ड्रामा, एक बहुत ही पिविटल पॉइंट जो आपका आ जाता है वो हेनरिक एप्सन का होता है. इज ए नॉर्वेजियन राइटर, पर उनके टेक्स्ट हमें इंग्लिश में कैसे अवेलेबल है? थ्रू ट्रांसलेशन स्टडीज, राइट? और लॉट ऑफ राइटर्स दैट वी स्टडी, फॉर इंस्टेंस यू आर अनंतमूर्ति's writings, or
when we are talking about a couple of these writings जो हमारे पास आती हैं वो ट्रांसलेशन के अंदर आ रही हैं. तो what are you able to see? कंपैरेटिव लिटरेचर आपका लिटरेरी बाउंड्रीज को, लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज को, नेशनल बाउंड्रीज को एक तरह से ट्रांसेंड करता है. और ये हमें क्या बताता है? ये हमें डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम्स, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, इन सब के बारे में बताता है. फॉर इंस्टेंस मैजिकल रियलिज्म को सलमान रश्दी कैसे यूज कर रहे हैं, और मैजिकल रियलिज्म को टोनी मॉरिसन बिलवड में कैसे यूज कर रही हैं, और गैब्रिएला गार्सिया मार्केज कैसे यूज कर रहे हैं, या गोगोल अपने नोज में कैसे यूज कर रहे हैं. दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर कंपैरेटिव लिटरेचर. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दैट. गुड इवनिंग सत्येंद्र, गुड इवनिंग लिजली. Merry Christmas to everybody. Merry Christmas to everybody. Yes, Monica, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. So sorry. सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट. ठीक है, और आपको पता चलता है, आपको बहुत सारे एंगल्स, वेरियस पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं. और आज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जो मैं आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग होमवर्क दैट आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू डू. और मैं चाहती हूँ कि आप उसको अच्छी तरह से कवर भी करें. तो कंपैरेटिव लिटरेचर वेरी सिंपल, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे अगर मैं देवशीष, अंजलि, पूजा, लिजी, सत्येंद्र, मोनिका, क्योंकि अभी इनका कमेंट सेक्शन में मेरे को नाम दिख रहा है, इनको हम कंपेयर करते हैं, कि स्टाइल्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल स्टडीइंग फॉर नेट, दे आर ऑल स्टडीइंग फॉर लिटरेरी बेस्ड एंट्रेंसेस, दे आर ऑल स्टडीइंग टू अपडेट देयर नॉलेज अबाउट लिटरेचर ऑल टुगेदर. लेकिन हर कोई डिफरेंट टाइप से आ रहा है. किसी कोई हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई हो सकता है मदर है, कोई हो सकता है कि मास्टर्स कर रहे हैं अपने, राइट. तो हर एक की स्टोरी डिफरेंट है, बट एवरीबडी इज अ स्टूडेंट, सो यू कैन कंपेयर देयर वर्किंग स्टाइल्स. दैट इज कंपैरेटिव लिटरेचर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, now आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी, an elephant and the blind men who were looking at the elephant. I'll also try to reduce my size over here so that you're able to see. ये बहुत ही famous story है, where there's one elephant and the blind men and all the 6 blind men who are there, वो different parts, एक बड़े elephant का different part touch कर रहे होते हैं, और उनका interpretation अलग होता है. ठीक है, कोई जो elephant के leg को करता है तो वो कहता है this is strong, this is a towery figure. कोई teeth को touch करता है तो वो कहता है ये तो this is something which is solid and marble. So again, this is where Wallace Stevens is also coming in. This is what is the beauty of comparative literature, that there are multitude perspectives that you can actually explore in a work जो आपको ध्यान में रखना है. तो Wallace Stevens ने लिखा है 13 ways of looking at a blackbird. एंड ये जो पोएम है ये यही आपको बताती है कि प्लूरैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव है. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू एक्चुअली सी. वी नीड टू रियली ओपन अप, वी रियली नीड टू ओपन अप. ठीक है, तो अगेन यही चीज आपको डीकंस्ट्रक्शन भी बताती है. यही चीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग, राइट, और when we are looking at John Fowles, the French Latin woman, multiple perspectives that are coming in. So again, ये प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का भी एक सेंट्रल बेडरॉक है. और कंपैरेटिव लिटरेचर भी यही कहता है, एक टेक्स्ट है तो आप उसको मल्टीपल एंगल से इंटरप्रेट कर सकते हो. दैट इज समथिंग दैट यू आर एबल टू लुक एट. ये काफी फेमस स्टोरी भी है. दिस इज एक्चुअली अ वेरी फेमस स्टोरी ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन ट्रेडिशन. इंडियन ट्रेडिशन को जब आप देखते हो तो ये काफी फेमस स्टोरी आपकी है, पैराबल ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट, राइट. तो ये जैनिज्म के अंदर भी आती है. तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक जो ब्लाइंड मैन है वो एलिफेंट को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, कोई एलिफेंट का जो ईयर को पकड़ा होता है, किसी ने ट्रंक को पकड़ा होता है, किसी ने लेग को पकड़ा होता है, तो वो उनका इंटरप्रिटेशन अलग होता है. जैसे अगर एक टेक्स्ट है, आप अगर उसको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग अलग होगा. आप उसको अगर पोस्ट कॉलोनियलिज्म की तरफ से देख रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा. सॉरी, आप उसको फेमिनिज्म की तरफ से देख रहे हैं तो obviously again आपका perspective बिल्कुल अलग ही होगा. That is what you are able to see. So please remember that when you're looking at 13 ways of looking at something like Wallace Stevens is also trying to tell you about, and वैसे भी you're all students of deconstruction, so this is exactly what you're able to largely see also. तो थोड़ा सा आपको ये careful रहना पड़ेगा. You'll have to be a little more mindful about this entire thing. और comparative literature यही कहता है, multiplicity of narratives, points of views all together. और तभी आपको total, जब आप ये सारी
सारी चीजें इंटेरोगेट करते हो तब जाके आपको कहीं ना कहीं टोटल अंडरस्टैंडिंग पता चलती है, तब जाके यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो 13 ways of looking at a blackboard by Wallace Stevens, this is clearly trying to tell you the same. so चाहे वो Wallace Stevens का एग्जाम्पल हो जाए, स्टीवंस का जो एग्जाम्पल है बेस्ट समराइज करता है that what is comparative literature. It's reading things from multiple perspective to get an overall better understanding. यही कल्चरल स्टडीज कर रहा है. देखो आजकल के टाइम पे अगर आप लिटरेचर का रोल एंड रेलेवेंस देखोगे तो आपको तभी पता चलता है जब आप प्री स्टडीज कर रहे हो. टेक्निकली ऑल ऑफ अस व्हाट डू वी कंज्यूम मोस्ट अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट आपका कैसे बनता है? इट इज बेस्ड ऑन योर लिटरेरी टेक्स्ट, इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्वर्जेशंस, इट्स बेस्ड ऑन लिटरेचर ओवरऑल. वहां से तो आप फिगर आउट करते हो राइट कि क्या किस किस तरह का एंटरटेनमेंट लोगों को पसंद आएगा, किस तरह का एंटरटेनमेंट लोगों को नहीं पसंद आएगा. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. अच्छा, आज हम एक जो पर्सपेक्टिव लेंगे वो पर्सपेक्टिव है लाइफ राइटिंग का. लाइफ राइटिंग हैज बिकम वेरी पॉपुलर. लाइफ राइटिंग जो है ये आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है. बायोग्राफिकल राइटिंग भी आपकी थी. रिमेंबर जाटका टेल्स जो है, जो बुद्धा की लाइफ के बारे में आपको बताते हैं. सो जाटका टेल्स इज आल्सो ट्राइंग टू गिव यू बायोग्राफिकल राइटिंग्स ओवरऑल. तो ये जो आपका लाइफ राइटिंग्स हैं, ठीक है, ये अच्छा अब ये देखिए, अमर जीवन राज सुंदरी देवी ने लिखी है. अमर जीवन इज अ वर्क दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेन ऑफ राज सुंदरी देवी. राज सुंदरी देवी इज एसोसिएटेड विद अमर जीवन राइट. किसने लिखा है माई प्लेस किसने लिखा है? हु विल टेल मी माई प्लेस किसने लिखा है? माई प्लेस किसने लिखा है? सो सैली मॉर्गन, प्लीज रिमेंबर दैट सैली मॉर्गन इज राइटिंग. सैली मॉर्गन इज राइटिंग माई प्लेस. सैली मॉर्गन, अभी we'll talk about Sally Morgan also. And Maya Angelou is of course writing. I know why the caged birds sing. Maya Angelou is writing this, and this is Raj Sundari Devi. Raj Sundari Devi was one of the only educated women in the in the early part that you were able to see 17th 18th centuries के अंदर women were not educated, and they were told that if you get education your husband would die early. So they were ensuring that patriarchy was ensuring that women were not getting access to education. और राज सुंदरी देवी surreptitiously secretly अपने आप को पढ़ाने लग गई, and she was able to actually teach herself very well. So Amar Jiban by Raj Sundari Devi, My Place by Sally Morgan, and I Know Why the Caged Birds Sing by Maya Angelou. ये तीनों में क्या कॉमनैलिटी है? ये एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव भी राइट. ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? अपनी खुद की जर्नी एक्सप्रेस कर रहे हैं राइट. व्हाट आर दे ट्राइंग टू एक्सप्रेस? व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स? दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग व्हिच इज कॉमन. दे आर ट्राइंग टू टेल यू अबाउट देयर लाइफ ऑल टुगेदर. सो लाइक आई टोल्ड यू, व्हेन यू आर लुकिंग एट राज सुंदरी देवी, राज सुंदरी देवी ने जो अमर जीवन लिखा है, she she's trying to tell you about the story of this Bengali illiterate woman. She's secretly acquiring literary text जहां पर women को allowed ही नहीं था, जहां पर women को knowledge लेना allowed ही नहीं था. What is she doing? She's secretly educating herself. She's secretly ensuring that she creates an environment where she's able to educate herself altogether. My Place by Sally Morgan. My Place by Sally Morgan, ये भी एक बहुत ही important work है. Now, why is this important? Why is My Place important? I'll come over here so that you'll be able to see this better. Right. Now, why is My Place important? My Place is also trying to tell you about Aboriginal colonialism जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी. Sally Morgan is a very important part of Australian Aboriginal writings. यहाँ पे केविन गिलबर्ट etc. ये सारी जो आपके Aboriginal writers होते हैं, right, Australian Aboriginal writers. तो अगेन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री को क्रिटिक कर रहे हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी बता रहे हैं, वुमेन का डबल मार्जिनलाइजेशन बताया गया है. दैट इज समथिंग दैट यू आर लार्जली एबल टू सी ओवर हियर. सो अमर जीवन बाय राज सुंदरी देवी, सैली मॉर्गन का माय प्लेस, ऑल दीज वर्क्स आर ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द हार्डशिप्स दैट वुमेन आर फेसिंग, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं अपने खुद के पर्सपेक्टिव से. एंड अगेन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माया एंजेलोस आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड्स सिंग, अगेन व्हाट आर वी एबल टू सी? we're able to see that this work which is coming in 1969, ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन के बारे में जो उनका ट्रॉमा एक्सपीरियंस होता है. रिमेंबर डबल मार्जिनलाइजेशन is something that a lot of people have spoken about. Even Spivak has spoken about double marginalization, right? And can the subaltern speak? She's also talking about double marginalization. Women were doubly marginalized, especially black women or your native जैसे आपके South Asian women हो जाती हैं, they were doubly marginalized. This is what you're largely able to see. So please keep that in mind. Do remember that ये सारे के सारे. अब देखो, अब इसमें comparative literature कैसे आ रहा है? Comparative literature ऐसे आ रहा है कि 3 लोग हैं, ठीक है, राज सुंदरी देवी, सैली मॉर्गन as well as माया एंजेलो.
तीनों की तीनों अपने हार्डशिप्स के बारे में बता रही हैं वाया लिटरेचर, right? They're all three talking about the hardships that they're facing via literature, via the course of literature. So आप क्या देखते हो, इस तरह से comparative literature काम करता है। आप एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं और उसके बाद आप टेक्स्ट को एक्सप्लोर करते हो। मोस्ट ऑफ दीज राइटिंग्स आर एजिटेशन राइटिंग्स, मोस्ट ऑफ दीज राइटिंग्स आर ट्राइंग टू टेल यू द ट्रूथ, दे आर ट्राइंग टू रिवील द ट्रूथ ऑल टुगेदर। ठीक है, तो चाहे आपका आपका कोई भी ये किसी भी तरह की सैली मॉर्गन के वर्क हो गए, ठीक है, अभी जैसे वी सॉ सैली मॉर्गन हो गई या राज सुंदरी देवी हो गई या माया एंजलो हो गई, बट आप एक चीज यहाँ पर क्या कॉमन देख पा रहे थे, व्हाट वाज द कॉमनैलिटी दैट यू वर एबल टू सी, you were able to see that they were trying to tell the stories of their angst, their problems, their troubles that they were facing all together. अच्छा अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे दलित लिटरेचर, डायस्पोरिक लिटरेचर, कुछ में एक आपको माइग्रेटरी राइटर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी राइटर अभी हम कवर करेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं, लेकिन आपके नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, जैसे ऑप्शन चॉइसेस में आपको मिल जाता है, क्वेश्चन ही आपको मिल जाता है, and otherwise also I hope all of us are very clear that here we're getting ourselves trained not just to clear NET and JRF, but also to clear our interviews, but also to clear and be very competent. ताकि जब हम लोग पढ़ा रहे होंगे, when you're going to be teaching as assistant associate professors of English literature, everything will be very clear to you, right? तो new literatures in English में आपका diasporic literature के साथ साथ migratory literature भी जिसे बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है। So हम लोग ये चीज़ें explore करेंगे, अफ्रीकन राइटिंग्स, वेस्ट इंडियन राइटिंग्स, राइट? तो किस तरह से ये राइटिंग्स का कॉमनैलिटी क्या क्या आ रही है, कॉमनैलिटी वैसे क्या है, दे आर ऑल ट्राइंग टू एक्सपोज द लाई। आज का आपका होमवर्क भी ना इसी से कनेक्टेड है, आज का जो आप होमवर्क करेंगे वो भी इसी चीज से कनेक्टेड है बेसिकली, राइट? दे आर ऑल ट्राइंग टू एक्सपोज द लाई ऑल टुगेदर। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दलित ऑटोबायोग्राफीज में, आपको दलित लिटरेचर का तो वैसे हम लोग एक सेपरेट क्लास करेंगे भी, क्योंकि आपके पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। What is Dalit literature trying to tell you? It is trying to tell you the stories, right? The narratives of sufferings, as they are called. They are called the narratives of sufferings overall. जहाँ पर you are critiquing Brahminical Hindu tradition, क्योंकि it is perpetuating untouchability altogether. That is what you are able to see. So एक critical lens के through आप देखते हो, जैसे लिम्बले का आकरमाशी, शांताबाई का चुरा कोलता का, या वाल्मीकि का जूतन, बामा का संगति. Bama is again a very important writer with feminist stance that you're able to see. She even upsetted the Tamil people of her community while, because she was writing, Bama was clearly there. So what are you able to see? You are able to see that all of these writers are actually giving you examples of how they're trying to fight against the injustices by just sharing their overall experiences. या आपको अपने overall experiences बता रहे हैं, right? That is what they're trying to talk about. तो Jhutan, for instance, Om Prakash Valmiki ki, how Jhutan leftovers of the upper caste children was being eaten. Akar Mashi also is trying to tell you the pain of the bastard child, the illegitimate child has no name, no place to call his own altogether, unfortunately, right? So that is what even लिमले as Akar Mashi is talking about. वैसे दलित लिटरेचर तो हम लोग करेंगे ही, या even when we are talking about चोरा कौल्तिका, this is actually trying to tell you कि डांसर का जो सन है उसको कैसे पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है, मिजरी फेस करनी पड़ती है, but tries to rise above and become a doctor. So ये सारी चीजें हम अक्सर भूल जाते हैं, especially like I'm also coming from the general category unfortunately, और ये जोक बन जाता है, ये general category is the most marginalized category, which is not true. देखो हमें कुछ set of privileges मिले हैं, right? For instance, imagine करिए, compare कीजिए why reservations are actually justified. Reservations are justified. Now compare yourself with a person who's probably like he or she has to do the work that the parents have asked them to do. He or she then, मतलब आपको, आप अगर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 10 घंटे 12 घंटे पूरा पढ़ रहे हो, राइट? लेकिन वो दूसरा बच्चा जो है वो कठिन परिस्थितियों से, काफी सारे प्रॉब्लम्स में जाके फिर जाके 4-5 घंटे का टाइम निकाल पाते हैं. So what are you able to see that of course there were these issues. Of course right now they've said कि economically basis पे reservations होने चाहिए, because your economic has now become a barometer to define
injustices. But again, यही चीज दलित literature आपको थोड़ा sensitize करने की कोशिश कराता है that this is not a simple child from a middle class or an upper middle class or a lower middle class family. This is how this person who's an pariah, who's an outcast, becomes a doctor. His journey of becoming a doctor, his journey of becoming economically independent. That is what you're able to see. Okay. So Dalit autobiographies, Dalit women writers, बामा क्या करती हैं, बामा पेट्रियार्कल ऑपरेशंस के बारे में बताती हैं. बामा तो was literally so when you're talking about बामा you should actually see गीता हरिहरन. जब आप YouTube पे जाएंगे ना, you should just type गीता हरिहरन and her interview with बामा, and it's a very beautiful touching interview. मैं आज आपको टेलीग्राम पे वो इंटरव्यू का लिंक भी भेज दूंगी. थोड़ा सा ये बीच बीच में इस तरह के जो, क्योंकि हम काफी सारे राइटर्स जो भी कर रहे हैं ना, दे आर अलाइव. ठीक है, जैसे अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, ही टीचेस मल्टीपल टाइम्स एट अशोका यूनिवर्सिटी आल्सो. तो ये अभी तक दे आर अलाइव. नाउ व्हेन दीस पीपल आर अलाइव, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू आल्सो वॉच व्हाट दे आर teaching on YouTube, what kind of content they are actually sharing on YouTube also. So I will share that link on the Telegram channel, Neerja Ma'am Testbook as well as English Literature Hustlers, ताकि आप थोड़ा सा उसको go through करें. Just one of you remind me and I'll share those links. Otherwise, you can even find it on YouTube. To just see that how Bama is trying to talk about. So वही comparative literature ये सारी चीजें देखता है. अच्छा, अब comparative literature क्या कहेगा? आपने identify करिए कि ये text हैं, तो देखिए ये language कैसे use कर रहे हैं, देखिए इनमें characters कैसे form हो रहे हैं, देखिए इसमें style of writing कैसा है, देखिए इसमें, तो मतलब आप comparative literature को बहुत ही अच्छी तरह से दोबारा से देख रहे हैं. That is what you're actually trying to do basically, right? Now the language of Dalits, non-Dalits, अब देखो, a lot of people have had problems, right? They have said that this Dalit literature has been very inappropriate, which is wrong. Why are you able to see that Bama का यही तो problem था that she used the native idiom that was being used altogether. But a lot of people said they were not happy with this colloquial style of writing. They said no, ये decorum को एक तरह से हटा रहे हैं. So people had problems, right? People had problems with the kind of language. तभी तो you're able to see that why OTT content is any day liked more than your sanitized content that you were able to consume on television, and suddenly television is going slow death altogether. That is because of the fact कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा censorship था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका curtailment थी. But what are you able to see? OTT में ऐसा कुछ नहीं है, right? OTT में ऐसा कुछ नहीं है. That's the reason people have really liked it, because be it your gangs of Wasipur or the various kinds of I myself not seen it though, but all of this content people have identified that yeah, ये जैसी language वहाँ के लोग बोलेंगे वैसी ही बोल रहे हैं. And that has been a common point, right? That has been a common point for people. They really like that overall. That is what you're able to see. Okay, so please keep that in mind. Please remember that. Hi Saima, hi Bache. The language, of course, really upset it because they were using colloquial language which had abuses, racial slangs. तो ये सारी काफी लोगों को काफी upset भी किए थे, right? Now, what is the most important common feature of all Dalit writings? They are trying to make sure that they fight against the dominance of the Brahminical Hindu order altogether. ठीक है? Now, जो teacher है झूठन में refuses to give admission to Valmiki is called Dronacharya. यू आर रीविजिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये मैं आपको जेन ऑस्टिन के बारे में, सॉरी जेन एयर के बारे में भी, यू आर रीविजिटिंग canonical text, you are revisiting canonical text, you are revisiting canonical ideas, you are revisiting and questioning them. आप ये नहीं है कि जो चीज आपको मिली हुई आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. यू आर रीविजिटिंग एंड यू आर क्वेश्चनिंग देम, राइट? सो यू आर revisiting canonical text, you are revisiting these canonical ideas altogether. So this teacher, because remember Dronacharya also did that. Dronacharya also did not give admission to Eklavya basically because he was having these prejudices altogether. राइट? एकलव्य के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है आपकी सैफ अली खान की, राइट? सो व्हाट आर यू बेसिकली एबल टू सी? यू आर एबल टू सी दैट these people are trying to question, these people are trying to attack, these people are trying to raise our awareness. ये कह रहे हैं don't accept the text that are given to you on face value. इसको question कीजिए, इसको पूछिए आप. That becomes very important. ठीक है? तो ये चीज भी आप याद रखिएगा. छोटी छोटी चीजें भी they become very important. Okay? Limley calls his mother, right, who's a
mistress of Patel, Sita and Kunti, right? And he himself calls, himself as Karan. So literally, kya kar rahe hain? They are trying to upset, they are trying to showcase this entire aspect. So one thing which becomes very clear over here, that we all have to remember is that ये revisit कर रहे हैं, and how are they trying to revisit? How are they basically trying to revisit? They're trying to revisit these canonical texts, and they're trying to tell us that you need to really, so just see, upsetting the traditional notion of purity and superiority. They're revisiting. They've got their own way. They've got their own understanding. वो कह रहे हैं कि we are not going to accept this kind of a way that has been told to us. ये चीज बहुत important हो जाती है comparative literature की. एक तरह से comparative literature की beauty है. Okay, authenticity of experience is very important, right? That is important. The use of language that you're able to see, like I said, this is commonplace language where the racial slurs, remember OTT का जो language use होता है, in which the abuses are also coming in, which we don't consider proper in on the other platforms. That's another thing that you're able to see. So activism का form है, right? You're rebelling. It's a form of activism. You're rebelling. This particular work is actually giving you a voice to protest. तो ये आपका protest literature हो रहा है. You are fighting, right? The pen is actually becoming like a fighting weapon. आपके लिए pen क्या हो रहा है? The pen is just not a pen. The pen is a fighting weapon for everybody. That is what you're able to see. ठीक है. सो अगेन देखो, अब कंपैरेटिव लिटरेचर क्या करेगा? कंपैरेटिव लिटरेचर कहेगा आप कलेक्ट करो दलित लिटरेचर को, ठीक है, Dalit literature, which is trying to raise voices against people, okay, who were in power, and they made sure that they were they were making the Dalit subservient to them. अब secondly क्या कहेंगे? वो कहेंगे Afro-American literature भी तो यही कर रहा है. That is what they'll say. They'll say Afro-American literature is also actually doing the same thing. Okay, then they will say post-colonial literature by default, all of post-colonial literature by default is doing the same thing. तो ये comparative literature कहता है, it tries to find strands of commonalities first, and then tries to look what are the key differences, that you are able to see. ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है. These are the things that you will have to keep in mind, and you'll have to remember all of that. और इन सब के बीच में common ground क्या है? Common ground between your Dalit writings, between your Afro-American literature, between your post-colonial writings is they're fighting against injustices. What are they trying to do? Basically, they're trying to fight against injustices. ठीक है, तो ये प्लीज इसको याद रखना. दलित राइटिंग्स को मार्क्सिस्ट राइटिंग्स या Afro-American राइटिंग्स के साथ जब आप कंपेयर करते हो, इक्वेट करते हो, that is a research in comparative literature. That is a research in comparative literature. The Dalit Panther movement जो था, it was actually inspired from the militancy of the Afro-American movement, right? Institutionalized movements थे. These were all institutionalized movements to fight against injustices. ये क्या थे? They were institutionalized movements that you were able to see that were trying to fight against injustices. So you'll have to keep that in mind. The Afro-Americans, what are you able to see? The Afro-Americans, they were segregated based on the color, the racial segregation. Dalits, of course, were segregated by caste altogether. But what were you able to see? They were commonly standing because they were all victims of injustices. Okay, they were all victims of injustices. That is what you will largely able to see. तो ये point आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. This is something that you'll have to keep in mind, that ये कहाँ पर इनका एक तरह से departure हो रहा है. तो आई होप थोड़ा थोड़ा करके आपको कंपैरेटिव लिटरेचर समझ में आ रहा है. सबसे पहले आप कॉमनैलिटीज फिगर आउट करते हैं, ये क्या कॉमनैलिटीज हैं. कॉमनैलिटीज जब आपको मिल जाती है, फिर आप देखते हो डिपार्चर्स कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, एंड देन आपको एक होलसम व्यू मिलता है लिटरेचर का. व्हाट आर यू, दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर. ठीक है, कंपैरेटिव लिटरेचर क्या करता है? वेरियस चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज करता है. तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप पढ़ते हैं हर रोज, दैट इज टेक्निकली अ पार्ट ऑफ कंपैरेटिव राइटिंग. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इज टेक्निकली अ पार्ट ऑफ योर कंपैरेटिव लिटरेचर. सो प्लीज remember that. ठीक है, तो even though Dalit literature can be different from the
Afro-Americans because the nature of, or what was their struggle is a little different, but overall the pain that they are experiencing, the suffering that they are experiencing, it is actually pretty much the same. The mental angst that they're witnessing is actually the same. Now again, writers and thinkers like Kansha Ilya is very important. एक time पे था last year जब आपके सारे PhD entrances में कांशा इलिया का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा था, राइट? नाउ व्हाट इज कांशा इलिया, राइट? कांशा इलिया क्या रिमाइंड करते हैं? व्हाट इज कांशा इलिया एक्चुअली ट्राइंग टू रिमाइंड अस? सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द फिगर ऑफ कांशा इलिया, व्हाट इज इट दैट कांशा इलिया प्रेडोमिनेटली रिमाइंड्स अस? ठीक है, ये चीजें, ये क्वेश्चंस पूछना, दे एक्चुअली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. वी एक्चुअली नीड टू ask these questions to each other. So what is Kansha Ilya? He is also talking about Dalit marginalization. Okay, he is of course written why I am not a Hindu. Why I am not a Hindu. इसके अंदर he is critical of the Brahminic culture. He is critical of the way of Brahminical civilization overall. और ये दलित ऑल्टेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको लिख लीजिएगा. दलित ऑल्टेरिटी, यू आर ट्राइंग टू लिटरली trying to create a different canon altogether, right? And what are you able to see? You are able to see that this work became a very important work. Why I am not a Hindu. Why I am not a Hindu by Kansha Ilya. ठीक है, Why I am not a Hindu by Kansha Ilya. दलित ऑल्टेरिटी का पार्ट ये बताता है. So again, comparative writings, comparative literature. यहाँ पर कांशा इलिया कैसे comparative literature कर रहे हैं? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो आपके बन चुके हैं उनके अगेंस्ट जाकर ही इज राइटिंग, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट. तो अगर आपका फॉर इंस्टेंस द टीचर नॉट गिविंग एडमिशन हैज बीन नेम्ड एज द्रोणाचार्य बिकॉज इट्स गोइंग बैक टू द स्टोरी ऑफ द्रोणाचार्य एंड एकलव्य, जहाँ पे we didn't even think that that story to be a very important part, but here Kansha is literally reminding us that no, it is a very important part. So please remember that. Okay, now ये कांशा इलिया का वर्क हमें क्या रिमाइंड करता है? कांशा इलिया का वर्क हमें फ्रांस फैनो के बारे में याद दिलाता है, राइट? What is it actually reminding us of? It's reminding us of Franz Fanon's work. I'll just come over here to the middle so that you'll be able to see. So Wretched of the Earth को एक तरह से हमें बता रहा है. And remember, Wretched of the Earth is trying to tell you about the mental violence, right? What is Wretched of the Earth trying to tell you? It's trying to tell you about the mental violence that we undergo because we are made to feel that we are inferior. हमें कैसा feel करवाया जाता है? That we are inferior. We are made to feel that we are actually inferior. That is what you are able to see. Okay? The process of repression, we are made to feel inferior. अब ये देखो, कंपैरेटिव लिटरेचर एक और चीज देखेगा, वी आर मेड टू फील इंफीरियर, तो इसको अंडू कैसे किया जाता है? दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर एबल टू लुक एट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर एबल टू लुक एट. सो अ लॉट ऑफ दीज राइटर्स विल डीकंस्ट्रक्ट द डोमिनेंट डिस्कोर्स. तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि व्हेन वी आर लुकिंग एट कंपैरेटिव लिटरेचर, कोई भी जहां पर आप कल्चरल स्टडीज की रिसर्च करते हैं, आप कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ते ही पढ़ते हैं बिकॉज यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कल्चर, you're trying to understand how the work is actually either complicit or contesting against the dominant discourse. तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, so please remember that. And when we are talking about migratory writing, when we are looking at migratory writing, ठीक है, जब हम migratory writing को देखते हैं, यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, migratory writing की कॉमन, देखो what is comparative literature? जब आप कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने की कोशिश करते हो जो सारे के सारे माइग्रेटरी राइटिंग्स में आपको मिलते हैं. सो जब आप कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने की कोशिश करोगे जो आपको सारे के सारे ऐसे माइग्रेटरी राइटिंग्स होता क्या है? जब हम माइग्रेट करते हो, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पर देवशिष हैं, साइमा हैं, लिजी हैं, मोनिका है, हिमांशी हैं, तो अगर आपको एक जॉब मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूजीलैंड में, तो आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप माइग्रेशन कर रहे हैं और वहां पर जो आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं वो आप लिखेंगे. ठीक है, आप उसके बारे में बताएंगे, आप बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं. So all of that will become a part of migratory writings. ठीक है, ये rootlessness, unbelongingness की common themes को दर्शाता है. These are the common elements that you are able to see. ठीक है, diasporic writings क्या होती हैं? Migration is just from one place you're going to another. Diaspora is basically when you've actually sprinkled your roots all across, right? तो diasporic writing conflict और tension के बारे में बताता है. For instance, Indian diaspora living in Australia, Indian diaspora living in Canada,
इंडियन डायस्पोरा, सो इट कैन बी सबसेट की बात करो तो डायस्पोरिक राइटिंग के अंदर आपका माइग्रेटरी लिटरेचर आता है, but it's not necessary that all of your diasporic literature will be migratory in nature. Please remember that. ठीक है, तो झुम्पा लहरी के writings for instance diasporic writings में, by the way we will cover diasporic literature, आपका separately cover होगा, we will be looking at diasporic literature separately. ठीक है, तो वो चीज आपकी आएगी, जैसे कि मैंने आपको कहा आपका दलित लिटरेचर के ऊपर भी आपकी सेपरेट क्लास है, right? You will be having your separate classes that are there both on your Dalit literature के ऊपर भी है आपकी separate class, and diasporic literature के ऊपर also you will be having your separate class, because these are two important topics that you are largely able to see, so please remember that also. ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा. All right, and now and when you actually go, you're also going because of hardships that you're experiencing. Acha, now this is a very interesting question, and I personally really love the background of this, because this is actually something that Satyendra Nandan. So I hope आप सो नहीं गए हैं, and in order to check that you're not slept so far, because there are one or two more important pointers that I have to talk about. Let's just take a quick this thing. So who is Satyendra Nandan? Who is Satyendra Nandan? Yes, Devashish, absolutely right, absolutely right. Not just hurdles, कुछ भी हो सकता है, आपको वहाँ पे कोई discrimination दिख रही है, या फिर आपको वहाँ पे कुछ similarities दिख रही हैं कि भाई न्यूजीलैंड का culture और हमारा culture ऐसे same है, right? For instance, when you were talking about जैसे the Indian origin cricket player of New Zealand, can you tell me what is his name? उनका जो Rachin, right? So his name Rachin Ravindran that we're talking about. So you know that there is this Indian diaspora that is clearly living in New Zealand, and they're active all together. तो वो आपका आ जाता है. Okay. Liji is like, may your words come true, amen. So Liji, then you're going to be sharing your story with everybody, that what were the hardships that you faced, and when you're writing that becomes your life story. So comparative literature आपका तो very good. So Liji says, may the words come true. So when the words will come true, and if Liji starts writing her own thing, that becomes life writing. वहाँ पे जो struggles Liji को face होंगे, that will become migratory writing. Liji is spread across multiple places, so sometimes she's in England for 2 years, and somewhere else she goes. That will become a part of the diasporic writings. Now, who's Satyendra Nandan? Satyendra Nandan is a very important Fijian writer that we are talking about. और यहाँ पर we will be able to see that how. So let's very quickly get started. So this Fijian writer has actually written this beautiful work. I'll come in the middle so that you'll be able to see it better. Yeah, now you'll be able to see it better. So let me just quickly tell you. So he's written Requiem for Rainbow. This is by Satyendra Nandan. So this is Satyendra Nandan that we were talking about. This is Satyendra Nandan that we were discussing. Satyendra Nandan that we were discussing. तो इन्होंने एक वर्क लिखा है Requiem for a Rainbow. Requiem for a Rainbow. Requiem for a Rainbow. ये Fijian writer है. Fijian writer है. He's a Fijian writer that we are talking about. Fiji Islands is also again where a lot of Indians were actually settled. Fiji, Mauritius. This was also a place where you were able to see Indians were there. Okay, and he was trying to tell about the fractures of our history. Fractures of our history, our heart's pain. The only manuscript to decipher are the broken, battered lives. The only manuscript is when you try to go back to the fractured lives altogether. This is what your, Satyendra Nandan is trying to talk about. So Satyendra Nandan, a Fijian writer, is trying to tell you how via literature you're trying to recover your fractured identity. आपकी जो fractured identity है उसको आप एक तरह से recover कर रहे हो. Good evening Saket, good evening. So वो जो fractured identity हो जाती है आपकी, आप उसको अच्छी तरह से cover कर रहे हो. You're actually trying to look at that, right? That is what you're able to see. So again, what are we able to see जब हम diasporic writings भी करेंगे? We'll talk about Gurmit literature, New Masala Indian diaspora, या आपका sugar diaspora. So ये जो हम लोग जब diasporic literature करेंगे, right, हम लोग we will be talking about diasporic writing. So Satyendra Nandan क्या कर रहे हैं? Talks about his anger, talks about his sadness, talks about his loss, especially when he's writing about his ancestors, because migratory writings क्या कर रही हैं? Rootlessness को discover करने की कोशिश कर रही हैं. They're trying to talk about the rootlessness, right? They're trying to talk about the rootlessness. ठीक है? This kind of autobiography is not merely a documentation of facts, right? लेकिन ये आपको inner experiences बताते हैं.
that is what they're trying to tell you, that is what they're trying to discuss, the inner realities. तभी एक तरह से ये एक तरह से थोड़ा सा आपका ट्रॉमा नरेशन भी हो जाता है, ट्रॉमा को नरेट करना भी हो जाता है, ठीक है। और सत्येंद्र नंदन के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वर गवर्नमेंट पीपल हु हैड कम, योर इंडेंचर्ड लेबरर्स वर आल्सो देयर। दिस इज समथिंग दैट व्हेन वी लुक एट योर डायस्पोरिक राइटिंग्स, वील बी टॉकिंग अबाउट दिस इन एंटायर एस्पेक्ट। जो आपका डायस्पोरिक राइटिंग्स होंगे उसमें आपका गवर्नमेंट पीपल की जो आइडेंटिटी है, दैट इज समथिंग दैट we will be discussing। इंडियन लिटरेचर के अंदर भी हम लोग ये चीज कवर करते हैं वैसे, बाय द वे, ठीक है। जो आपका गवर्नमेंट पीपल का क्वेश्चन है, दैट इज समथिंग दैट वी कवर व्हेन वी डू इंडियन राइटिंग्स एज वेल, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दैट। अच्छा, नाउ व्हाट इज द हार्श रियलिटी? द हार्श रियलिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल इन गोइंग एज इंडेंचर्ड लेबरर्स, people going and settling abroad, there were multiple reasons, ठीक है। Over 6 lakh, right, over 6 lakh Indians were brought from May 1879 to 1966. So it's just not the slaves that you were able to see, but आपके indentured laborers भी जो हैं, that is also something that you'll have to keep in mind, that they were also going all together. They came as young men, Hindu, Muslim, North Indian, South Indian, and they were having their passions, their prejudices all together. ये जो indentured laborers हैं, अच्छा, इंडेंचर्ड लेबरर्स का एक ही सिर्फ फर्क था स्लेव से, कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स थे, बस एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस था ना, दे वर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स, राइट। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका डिपार्चर था, दैट वाज दे वर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स, दैट्स इट, दैट वाज द ओनली डिफरेंस दैट यू वर एबल टू सी। दे ट्राइड टू फाइंड अ फुट होल्ड इन द एलियन लैंड ऑल टुगेदर। विदेशिया ट्रेडिशन भी यहीं से आता है, विदेशिया ट्रेडिशन भी यहीं से आता है, दैट यू आर going to an exile like Ram, and you are really missing your home country। तो ये सारे ट्रोप्स यूज होते हैं, ये सारे के सारे आपके मोटिव्स यूज होते हैं, राइट। मोटिव्स आपके ये सारे के सारे यूज होते हैं डायस्पोरिक राइटिंग्स में, मोटिव्स रिकरिंग जो इमेजेस आ रही हैं, दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी। सो सत्येंद्र नंदन इज ऑफ कोर्स देयर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सत्येंद्र नंदन क्या कह रहे हैं, दैट फ्रैक्चर्ड वे टू सम अप, इफ यू हैव टू सम अप, फ्रैक्चर्ड वे ऑफ लुकिंग एट द रियलिटी। फिजी में पॉलिटिकल अपहीवल भी हुआ था, therefore he also had to leave Fiji also, right, he had to leave Fiji also। ये वैसे हनीफ कुरैशी भी बोलते हैं, the Buddha of suburbia में, my name is Kareem Amir and I am an Englishman almost, because I was born and bred। So again आपको even if you're brought up in a particular country, it need not be your country, because maybe that country has not accepted you। And this is where Meena Alexander talks about the poetics of dislocation, जिसको हम cover भी करेंगे। So comparative literature ये सारी चीजें आपको बताता है, fragile nature। देखो ये आप क्या कर रहे हो, you are using literature to vent out, you are using literature to vent out, that is what you're doing, right। So his autobiography is also a historical narrative, Satyendra Nandan ka। The outside is the movement and the placement of people in a given historical movement, what actually happened in the past, and inside component consists of thoughts of historical agents। All history is the history of thoughts, all history is the history of thoughts, right। So again, what are you able to see, that how these life writings, these autobiographical writings, these migratory tales, ये आपको एक हिस्ट्री बताना चाह रही हैं, आपको एक रियलिटी बताना चाह रही हैं, which has missed the mainstream eye, which has missed the mainstream eye, unfortunately, that is what you are able to largely see, ठीक है। So Fijian writer Satyendra Nandan talking about reclaiming altogether, the way that they are discussing, that is also something which is very important, ठीक है। अच्छा, I really want all of you to think, I really want all of you to think critically, think deeply। This is of course not just one homework that I'm giving you, homework आपको end of the class भी मिलेगा, 2-3 मिनट और हैं before I let you all go, but I really want all of you to think and ponder, think about autobiographies जो आपने पढ़ी हैं, कोई भी language में वो हो सकती हैं, क्या क्या differences हैं उन autobiographies में, क्या जो men लिख रहे हैं वो same as women, like जो चीजें maybe Anne Bradstreet लिख रही है, if she is writing an autobiography, which she isn't, but are they different, are they different from men, what are they talking about, what are they discussing, are there a lot of men's autobiographies available also, men का autobiography इतना available है कि नहीं, what is the key difference, आप किसी भी पैरामीटर पे, तो comparative literature, find out what is the commonality, then find out the points of departure, ये आपका मेथड comparative literature में एक तरह से फॉलो होता है, ठीक है। अब देखो यही 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 आपको पता चलता है, यही आपको दिखता है, यही आपको थोड़ा सा समझ में आता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की जो स्टोरीज है उसमें सोशलिज्म का एलिमेंट है, मार्क्सिज्म का एलिमेंट है,
व्हाट इज मार्क्सिज्म का एलिमेंट? जब आप इक्वालिटी में बिलीव कर रहे हैं, व्हेन यू आर बिलीविंग इन द फैक्ट दैट एवरीबडी नीड्स अपॉर्चुनिटीज ऑल टुगेदर, तो दैट इज मार्क्सिस्ट लीनिंग ऑल टुगेदर, राइट? और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डी एच लॉरेंस का फ्रॉइडियन ब्लड कॉन्शियसनेस, ही इज टॉकिंग अबाउट blood consciousness, star equilibrium. If I am happy, then internally, mentally, personally happy, I'll be able to perform better. If I'm sad, my performance will actually will definitely go for a toss. That is what you're able to see. Okay. George Orwell is of course known for his democratic outlook. Orwell को हम लोग किस लिए जानते हैं? Orwell को हम लोग democratic outlook के लिए जानते हैं. That is what you're able to see. Rousseau's passion, are shown. Wordsworth. So again, you're trying to compare. आप जब भी categorize करते हो that these are Victorian novelists, these are realist writers, these are French symbolists, तो आप क्या कर रहे हो? आप compare, आप पहले commonality निकाल रहे हो, फिर points of departure निकाल रहे हो. So literally all categorization is a part of comparative literature. That is what you're largely able to see. Now, please remember, whenever we are talking about comparative writings, I'll come over here so that it becomes a lot more clearer to all of you. Whenever we are discussing about comparative writings, आपका मैं बार बार यही repeat कर रही हूँ, सबसे पहली चीज क्या करने की कोशिश करता है? पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी. सबसे पहले क्या करने की कोशिश करता है? पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी. फिर करेगा कि क्या क्या डिपार्चर्स हो रहे हैं, और ताकि आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव मिले, कंप्लीट पर्सपेक्टिव, कोहीसिव पर्सपेक्टिव मिले. एक तरह से आपका कोहीसिव कंप्लीट पर्सपेक्टिव आ जाना चाहिए. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी, दैट इज व्हाट यू आर एबल टू लुक एट. दिस इज द क्रक्स एंड द जिस्ट ऑफ कंपैरेटिव राइटिंग्स. जैसे आप देखो, रियलिस्टिक राइटिंग्स काफी डिफरेंट है. फ्रेंच रियलिज्म बहुत ज्यादा डिफरेंट है. कल हम 8:30 PM की क्लास में भी करेंगे. तो फ्रेंच रियलिज्म बहुत ज्यादा डिफरेंट है. ठीक है. वर्सेस आपका हेनरिक एप्सन का डॉल्स हाउस का जो रियलिज्म है, या मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टीन का जो रियलिज्म है. रादर फ्रैंकेनस्टीन में तो आपका साइंस फिक्शन भी आ रहा है, थोड़ा साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी आ रहा है. तो व्हाट आर यू एबल टू सी? यू फर्स्ट ट्राई टू फिगर आउट. या फिर मेन जिस तरह से रियलिस्टिक राइटिंग्स लिख रहे हैं एंड विमेन जिस तरह से रियलिस्टिक राइटिंग लिख रही हैं, they're all very different, right? They're all very different. That is what you're largely able to see. Okay, so overall, please याद रखिएगा. And what is comparative literature trying to tell you? Comparative literature is trying to tell you a very basic thing also, that there are multiple ways of looking at a text. There are multiple ways of looking at a text. Animal Farm allegory भी है. Fable, which is having a moral story attached to it. Animal fables है. Political treatise भी है. Totalitarianism को के against जाती है. That is what you are able to see. Coleridge का Rime of the Ancient Mariner moralistic way में भी interpret होती है. Rime of the Ancient Mariner that you are able to see. ठीक है. Supernatural magical elements भी हैं. Harry Potter is mixture of magic, adventure, mystery, fantasy. तो एक single work can actually lend itself to multiple readings. यही तो आपका बख्तिन का कॉन्सेप्ट हो जाता है, राइट? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली बख्तिन इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट, दैट वन वर्क कैन एक्चुअली बी रेड बाय मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ओवरऑल. ये भी चीज आपको कंपैरेटिव लिटरेचर कहती है. रश्ती का मिडनाइट चिल्ड्रन, ग्रिम का फेरी टेल्स. तो मल्टीपल वेज से you can actually read. This is also what comparative. This is the same thing that we started on with 13 ways of looking at a blackbird by Wallace Stevens. We're coming back to conclude the class by the same logic. That is what we were talking about. अच्छा, जल्दी से 2 पॉइंट्स मैं और बता देती हूँ. ठीक है. आपका ट्रांसलेशन स्टडीज, आपका जो ट्रांसलेशन स्टडीज है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर. ट्रांसलेशन स्टडीज भी आपका कंपैरेटिव लिटरेचर का पार्ट है. व्हेन यू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, इट इज एक्चुअली अवेलेबल इन अनदर लैंग्वेज. हो सकता है उसका मीनिंग चेंज हो गया हो कंप्लीटली, बट इट इज एटलीस्ट अवेलेबल. यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी. हेनरिक एप्सन का डॉल्स हाउस, बिकॉज इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 14 लैंग्वेजेस. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे. ठीक है. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे. Because it has been translated into 14 languages, what are you able to see? That we are able to read, we are able to understand it. ठीक है. Translations of epics that we are able to see. So translation studies is also a very important point for your कंपैरेटिव लिटरेचर. अच्छा, अब ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं. एचबे. देखो, चिनुआ एचबे ने क्या किया. पहले हम लोगों ने क्या बोला था? पहले हम लोगों ने कहा था, इट वाज व्हाइट मैन्स बर्डन, द ब्रिटिशर्स वर कमिंग इन एंड द ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट they were making the so called heathen native become more civilized.
तो चिनुमा एक्चुअली दिखाना चाह रहे हैं that before the arrival of the Britishers, there was a society that was already existing. There was no civilizing mission at all that the Britishers came for. This was one of the first key texts that tried to show that there was life, there was actually thriving life before colonizers even came. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है दैट एक्चुअली ट्राइज टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजिंग the process of humanizing the so-called animals of African. What is he trying to show you? He's trying to tell you that this is what he's trying to show you, that there was already an existing culture, there was already existence of a prime culture that was already there. There was a perfectly cohesive society जिसके values थे, traditions थे, customs थे, love, hate, violence सब कुछ था, right? And this peace was actually something that was unfortunately broken, right? This peace was something that was unfortunately broken. So that is what you are able to see. बहुत इंपॉर्टेंट इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. हेनरी कैप्सन का वर्क कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है? 14 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है. इनका ऐसे है टू नाइजीरियन राइटर्स चिनुआ एचबे एंड वोल्शोइंका. ये भी आ सकता है. Who are the who are the two Nigerian writers that Phillips talks about? He talks about Achebe and Worshoinka. See this. Okay, it is an archetypal African novel. It is trying to tell you the falling of traditional African rural society and the coming in of the white man. There was a system that we had, the frugal innovation that all of us are talking about, going back to the frugal lifestyle. We were all living like that only. But with the advent of capitalism, we were able to see that that was actually broken. That was actually broken. ठीक है? तो ये चीजें आपको ये सारे के सारे राइटर्स याद दिलाते हैं हाउ यू आर एबल टू सी अ कॉन्गो की स्टोरी कॉन्गो इन एग्जाइल द डाउनफॉल ऑल टुगेदर ऑफ अ कॉन्गो इज द डिसजंक्शन ऑफ अ मोफिया सो क्लियरली आपका जो ईबू कल्चर पहले था आपका जो ईबू कल्चर थिंग्स फॉल अपार्ट में पहले से ही था दैट इज अनफॉर्चुनेटली ब्रोकन विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स दैट्स एक्चुअली ब्रोकन दैट ऑर्डर इज एक्चुअली ब्रोकन तो कंपैरेटिव लिटरेचर ये भी देखता है कि देखो टेक्स्ट को क्या वो टेक्स्ट मीनिंग क्रिएट कर रहा है राइट व्हाट इज द न्यू मीनिंग दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट व्हाट इज द न्यू मीनिंग दैट अवर टेक्स्ट इज एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट ब्लैक्स आर नॉट अनसिविलाइज्ड right this was the wrong myth that was perpetuated this was the wrong myth that was getting perpetuated altogether so aap kya dekh rahe ho there is voice that is given to the other voice given to the other given to the other. That is what is happening. This is what you are able to look at. तो कंपैरेटिव लिटरेचर इसको भी अच्छी तरह से देखता है. एक लास्ट एग्जांपल आज का कंपैरेटिव लिटरेचर के केस के लिए लुक एट शार्लेट ब्रॉन्टेज जेन एयर. उसके अंदर क्या होता है जेन रीस की जो कि पोस्ट डेटेड प्रीक्वल है पोस्ट डेटेड बाद में पोस्ट डेटेड प्रीक्वल प्रीक्वल ये आपको बर्था मेसन की स्टोरी बताती है. ये आपको बर्था मेसन who's actually shown to be the mad woman in the attic, right? As Gilbert and Gubar talk about in Jane Eyre. What are you able to see? बर्था की पूरी स्टोरी अच्छी तरह से जीन रीस आपको बताती है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर हाउ शी इज लॉक्ड अवे इन द एटिक ऑफ थॉर्नफील्ड एंड जीन रीस की व्हाइट सगासोसी में द हीरोइक रॉचेस्टर बिकम्स द विलन. The heroic Rochester is becoming the villain altogether. So Bertha Mason, the true daughter of the infamous mother, dragged me through all the hideous and degrading agonies which must attend. This is what Jean Rees was trying to talk about. Right? So Bertha Mason की जो excuse me, I'm so sorry. I hope you're able to see this. I'll come a little down. So Bertha Mason की जो story आपको पता चलती है, via White Sargasso in the form of Antonia. That is what you're able to see. Jean Rees, this she that you're talking about is Jean Rees, right? This she that you're talking about is Jean Rees, right? The Dominican writer that we're talking about. Jean Rees क्या बताना चाहती है कि बर्था की जो insanity है, it was not hereditary, but it was a result of abominable treatment meted out to her by Rochester. For me, she must be right on stage, she must be least possible, etc. So Bertha Mason को reinvent किया जाता है यहाँ पर, right? So Antoniette, the beautiful young Creole heiress pulsating with life altogether in the backdrop of slavery. What are you able to see that this Creole woman is there, but how unfortunately with उसकी पूरी की पूरी story आपको बताई जाती है. So clearly, comparative literature is also trying to show you that how
People are reading texts and things which are uncomfortable to them, they are rewriting those, right? They are rewriting things that are actually uncomfortable to them. तो ये चीज आपको अच्छे से देखने को मिलती है. Okay, so that is what the entire story is. So Jean Rees हो गया, Chinua Achebe का Things Fall Apart हो गया, they are all trying to fight. कांशा इलिया हो गए दलित लिटरेचर में, या फिर आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए, they are all trying to question the dominant canonical order. ठीक है. अब आज का आपका होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क है ट्राई टू कैप्चर. हम लोगों ने काफी सारे पॉइंटर्स टू स्टार्ट कंपैरेटिव लिटरेचर बोला है. ऑफ कोर्स वी विल बी कंटिन्यूइंग विद कंपैरेटिव लिटरेचर, बट आज का आपका होमवर्क काफी सिंपल है. चाहे कुछ भी हो, देखो कल्चरल स्टडीज से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो सबसे पहले तो आई वांट यू ऑल टू रिव्यू. अगर आपने नहीं किया, डोंट वरी, वी विल बी रिवाइजिंग इट विद यू एज वेल. रिव्यू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कल्चरल स्टडीज. इसी को ही हम लोग इसी से ही थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कल की क्लास को. और आई ऑल्सो, वैसे अभी थोड़ा सा और होता, अदरवाइज आई वुड हैव कंप्लीटेड 2 more. एनीवे, वो अमेरिकन पोएट्स हम कल करते हैं, ठीक है. सेकंड, आई वांट यू टू प्लीज रिव्यू योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म. चाहे आप पीटर बेरी पढ़ना चाहते हो तो आप पीटर बेरी पढ़ सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. आप प्रमोद के नायर पढ़ना चाहते हो तो आप प्रमोद के नायर पढ़ सकते हो. कोई और बुक अगर आप सारा स्टोन पढ़ना चाहते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. उल्टा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता भी देना कि आप कौन सी बुक से पोस्ट कॉलोनियलिज्म को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है. सो कल की क्लास से पहले, चाहे आपने प्रमोद के नायर से पोस्ट कॉलोनियलिज्म करना है तो आप प्रमोद के नायर से रिवाइज कर लेना. पीटर बेरी से पोस्ट कॉलोनियलिज्म रिवाइज करना है तो आप पीटर बेरी से रिवाइज कर लेना. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल. लेकिन आप जिस भी बुक से रिविजन कर रहे होगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म की, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं एक बार अंदाजा लगा लूं कि आप कितने सारे लोग कौन से बुक को पढ़ के आ रहे हैं, ताकि कल का जो थोड़ा सा हम स्टार्टिंग का क्विज लें, आई बी एबल टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली. फाइन. Okay, so please keep that in mind. Please remember that in case if there are, in case if there are any other, in case if there are any other doubts that you're having, please feel free to let me know. I hope the mail ID is also there, neerja.raheja.faculty@testbook.com. मुझे please बता दीजिएगा. मुझे 2-3 emails आए भी हैं. I'll be replying to those emails as well. I'll catch up with all of you tomorrow, and please make sure that you review everything that we've done. Fine. Thanks everyone for joining, and Merry Christmas to everybody. Please revise and review comparative literature. अभी ही जो pointers हमने discuss किए हैं, क्योंकि fresh है आपके mind में, इनको अभी capture कर लीजिएगा, and I'll catch up with all of you tomorrow. Fine. Thank you so much, Divya. Thanks so much everyone for joining. Thank you, and take good care of yourselves. Fine. Thank you, Manshi. Thanks, Vijay. Take care. Thanks, Devashish. Good night, everyone. Sweet dreams.